Welcome. Welcome to all of my students. Now we are discussing of the syllabus of ISC class 12, section C, linear regressions of AGGARWAL. Here is a question, and previously we had discussed question number 1 to question number 9. Now in my second video we are now discussing about question number 10. The correlation coefficient between x and y is 0.6. Therefore, correlation coefficient between x and y, correlation and coefficient here is r. ठीक है, correlation coefficient कितना है? ये जो रिग्रेशन का चैप्टर में correlation coefficient दो है, एक correlation coefficient है, ठीक है, और अच्छा क्या ए भी एक coefficient है, ठीक है, linear equation. ठीक है, linear regression, coefficient of linear regression. This is the a correlation coefficient और ये है linear coefficient. ठीक है, याद रखना. तो now here is the correlation coefficient between x and y are equal to क्या है हम लोग को मालूम है जो by(x) into bxy equal to 0.6. It is given variance of x, that is delta x square. Variance of x means delta x square, standard deviation का square equal to 225, and therefore the standard deviation will be root over 225, that means 15. And variance of y means standard deviation का square equal to 400. बोल दिया है यहाँ पर देखो variance of a, तो हमारे delta y equal to root over 400, that means 20. And always we have to take positive. If you root any number, then you will get answer plus minus, but we have to take plus, always plus. Okay. Now here is also given mean. Average of x is x bar equal to 10. Average of y equal to x bar equal to 20. Okay. Then we have to find out. क्या बोला? Here is the questions. Find the equation of regression lines. Lines. दोनों इक्वेशन निकलना होगा. About y on x, about x on y. ठीक है, ऐसे लिखना है. The expected value of y when x equal to 2. Then you have to use that equation which will be calculated about y or upon x. सही इक्वेशन में y x का वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू मिल जाएगा. तो दोनों निकलना होगा. ठीक है. नेक्स्ट इन, ठीक है, 10 and mean of y is 20. Mean of y is 20. Then next, find the equation of the regression lines. Now we know that the equation of the regression line of y on x, that is y minus mean of y equal to regression coefficient of y on x and into x minus x mean, and that means y minus y bar equal to byx into x minus x bar, because y on x, and that's why on the left hand side you have to write y minus y bar, and on x that means you have to write x minus x bar on the right hand side. And another equation of the regression line is x on y, that means x means the left hand side x minus x bar, and y means y minus y bar. Clear? Now, the regression coefficient of y on x, we know that there is a formula that r into delta y by delta x, and from this equation we know the value of r, the value of delta y, value of delta x. It is previously calculated that r is given 0.6 and delta x 15 and delta y equal to 20, and that's why byx equal to 0.6 r into 20 by 15, that means 0.8. Clear? And regression coefficient of x and y, then dxy, that is r into delta x by delta y equal to 0.3 into delta x का वैल्यू 15 और delta y का 20, मैंने 0.45. बस चले byx bx मिल गया. The equation of regression lines of y on x will be y minus this, and from the equation
and above the calculation we get y bar x bar byx, and we have to put the value of y bar equal to 20, that means mean y 20, byx 0.8 which have been calculated before, and x minus x bar is given 10. Okay, now 0.8x minus 8, that means after solving rule we get minus 8x means 8x by 10, by calculation 4x by 5, and after that adding these sums we get this 4x minus 5y equal to 60. 4x minus 5y equal to, after value putting the value y bar x bar byx, we get this and this is the equation. Clear? Now the equation of regression of line oppositely. Here is y on x, now x on y. That means x bar equal to bxy, xy bxy. Y on x, that means byx. Now x minus 10, we know that the x bar 10, y bar 20, bx is 0.45. After calculating, we get that 20x minus 9y minus 20 equal to 20, 0. This is the second equation. Okay, তাহলে equation of regression lines. Question was lines, plural number. That means two equation. Clear? Next, the expected value of y when x equal to 2. তাহলে y का value क्या होगा जब x equal to 2? तो मैंने you have to calculate the value of y on x. তাহলে y on x, what is the equation of y on x? This is the equation y on x. This is the equation y on x. देखो, so then you have to use this equation, and after that y minus y bar this we put this equation again, and we get this equation equal to 4x minus 5y plus 60. Previously we get the when x equal to 2, that means 5y equal to 5y इधर right तरफ ले जाओ, you have to take 5y on the right hand side, and that's why this plus 5y equal to 4x plus 60. So 5y equal to 4x plus 60. Okay? That means 4 into 2, you know, when x equal to 2 and 60, 68, so 5y equal to 68, so y equal to 68 by 5, that means 13.6 answer. Clear? Always remember that you have to find out the value of y when x equal to 2. That means you have to use that equation in which the equation is created by y on x. Okay, and that's why we have to use this equation y on x. Clear? Now question number 11. The following table shows the mean and standard deviation of marks of mathematics and physics scored by the students of a school. Okay? Here is given this table into the questions, mean and standard deviation. Mathematics को x पकड़ लिया, you have to let this is x and this is y. Physics তাহলে mean হচ্ছে this, that means x bar and 81 equal to y bar. ठीक है? And standard deviation delta x equal to 7 and delta y equal to 4. It is given. Then the correlation coefficient between the given marks is 0.8x. The correlation coefficient. Correlation coefficient means, what does it mean correlation coefficient? The जो दिया सब लिख दो. Correlation coefficient between x and y means r. Correlation coefficient, that means r equal to 0.86.
it is also given. Estimate the likely marks in physics if the marks in mathematics are 92. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है y, और मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स है y, x. ओके, मैंने यू हैव टू फाइंड आउट, ये बोला एस्टिमेट द लाइकली मार्क्स इन फिजिक्स, y को निकालना है, इफ द मार्क्स इन द मैथमेटिक्स, मैंने यू हैव टू फाइंड आउट the marks of physics on the mathematics, because mathematics is given, and that's why you have to find out the equation of physics on mathematics. Okay, clear? Here such is given. Now we have to find out the regression equation of physics, regression equations or regression line of regressions of physics or mathematics. That means physics क्या है? y, mathematics x, and that's why on the left hand side y minus y dash, you have to make subject as physics, y minus y bar, y minus क्या है? y bar. देखो जा गिवन है वही लिख दिया हम लोग, मीन standard deviation of x, standard deviation of y, correlation coefficient of between the x and y 0.86. Okay, and find the likely marks in physics, likely marks in physics. ठीक है जी, in physics क्या है? y है. If the marks in mathematics is x is 92, and that's why you have to find the equation of physics on x, on mathematics. You have to find the regression line of physics on mathematics. Then we have to find out the regression equation of physics on mathematics. That means physics is y, mathematics is x. Mathematics is x. Okay, and that is y minus y bar. And on the left hand side you have to create subject, you have to make subject with physics, and that's why physics y minus y bar equal to by x. Jetu y on x, that means by you have to take by x, and after that x minus x bar, because on x minus x bar, and that is the equation. And here also we know that y bar, x bar and by x. No, by x here is not given, by x. Okay, no, Vix is not given, that's why you have to find out Vix. Okay, now we have to put y minus y bar. Y bar का value क्या है? 81. X bar value 84. But we know that we don't know the Vix, and that's why Vix will be calculated. Vix क्या है? ना, the regression coefficient of y on x. Regression coefficient of y on x. regression coefficient of y on x. कैसे? देखो, regression coefficient of y on x, r equal to क्या है? We know that Vix equal to r equal to delta y by delta x, y upon x, y on x, that means y upon x. बस ऐसे नहीं, कोई r वैल्यू मालूम, we know that r, we know that delta, standard deviation of y, standard deviation of y. This is the Byx 86 by 175, and that's why you have to put 86 by 175. After calculation we get क्या है? देखो कैसे आंसर हो रहा है. ठीक है, आफ्टर दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, बट we have to calculate. Here is the question was क्या? Now you have to find the marks in physics when marks in mathematics is 92. ठीक है, तो मैथमेटिक्स कौन है? मैथमेटिक्स तो एक्स है, चलो एक्स का जगह में 92 पुट कर, चलो वाई मिल जाएगा. बस वाई इक्वल टू एक्स का जगह 92 पुट करो. वेन मैथमेटिक्स इज दैट इज एक्स इक्वल टू 92 पुट करो. करने के बाद मिला 84.931 अप्रॉक्स. चलो देयरफॉर द लाइकली मार्क्स इन फिजिक्स
The likely marks in physics, क्या होगा? Likely marks in physics, if the marks in mathematics are 92, is 84.931. मैथमेटिक्स का नंबर जब 92 होगा तब हमारा फिजिक्स का नंबर होगा 84.931. दिस इज द आंसर, अप्रोक्स आंसर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 क्या बोला? देखो, फ्रॉम द गिवन डेटा वेरिएबल दिस मीन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो गिवन, ठीक है, बोथ, एंड द कोफिशिएंट कोरिलेशन इक्वल टू 2/3. ओके, कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑल्सो 2/3, एंड फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ BYX एंड BXY. ठीक है, इसका तो फॉर्मूला तुम लोग को मालूम ही है. And the regression line of x on y, yet of x and y, not y on x, x on y, and most likely value of x when y equal to 14. ठीक है, this you have to find 3 figures. You are given that r equal to क्या बोला? कोफिशिएंट कोरिलेशन मीन्स क्या है? कोफिशिएंट मीन्स ए r है. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है आर से प्रेजेंट करता है. आर इक्वल टू क्या है ना? 2/3 बोल दिया. ठीक है, एंड अबव डेटस क्या है? फाइंड BYX BXY दोनों निकलना है. इसको होमवर्क करके करो. आर तो मालूम है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई मालूम है. ताले क्या फार्मूला है? BYX इक्वल टू क्या है? आर इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. BXY इक्वल टू क्या होगा? आर इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई. उल्टा होगा. ठीक है, ये कहाँ से आएगा? इसका फार्मूला होगा, देखो क्या, अब पहले फार्मूला यूज़ किया, एक बार देखो पहले सेंस में क्या है? आर इक्वल टू की डेल्टा वाई बाई डेल्टा BYX मैंने वाई अपॉन एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. और जब BXY निकलेगा तो क्या होगा? आर इंटू एक्स अपॉन वाई माने डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, उल्टा होगा. Here you have to find out BYX, that means y upon x, that means you have to use the r into y upon x, delta y by delta x. And when you will find BXY, then you have to use r into x upon y, that means delta x by delta y. इसका रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा. ठीक है, तो हो गया. और इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन क्या निकालना बोला? नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन on key x and y, that means x minus x bar equal to BXY. क्यों XY याद रखना, XY equal to y minus y bar. Clear? And then find the value of क्या? likelihood x when y equal to 14. So you have to use that equation, x minus x bar equal to BXY into y minus y bar, and after that in that equation you have to put y equal to 14. Then you will find the value of x. Clear? And you have to practice it, homework. If you don't get the right answer, then you comment me, I will solve it. Okay, I send you, I must send you. Next sums क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 13 की बोलছে, there are two series of index numbers such that P for price index and S for stock of commodity. Question number 13. There are two series of index numbers such that P for price index and S for stock of commodity. Okay. The mean and the standard deviation of P are 100
and 8, and of A's are 103 and 4 respectively. क्या क्या बोला? Now here is given. Now there are two series of index numbers. P for price of index, प्राइस इंडेक्स, एंड एस फॉर स्टॉक ऑफ कमोडिटी. मैंने एक व्यवसायदार जो है, बिजनेसमैन जो है, उसका थोड़ा आइटम कमोडिटी है, स्टॉक है, जो स्टॉक एक्स से प्रेजेंट कर रहा है और उसका प्राइस पी से प्रेजेंट कर रहा है. द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑन ऑफ पी आर 108. मीन ऑफ पी मीन्स 100 and mean of standard deviation is 8, and mean of A's are 103 and standard deviation of A's is 4 respectively. Now here is given that what? Given when the mean of P equal to 100 and standard deviation of P delta P equal to 8, the mean of A's is 103 and the standard deviation A's is delta is by 4. At first you have to collect data, all data, rightly. Now the correlation coefficient between two series, that means P and S, is 0.4. The correlation coefficient between P and S are equal to क्या है? 0.4. Next, with this data, obtain the regression line of P on S. Mind it, P on S, not S on P. Oh, here also be S on P. Therefore, lines, not only line, so to lines. Lines means more than one. That means P on S and S on P. Okay? बस. The regression line of P, देखो क्या होता है? P on S means क्या होगा? P minus P bar equal to BPS into S minus S bar. तो P minus 100, P bar का वैल्यू 100 है, BPS सेम प्रोसेस, S minus 103 पुट करो. BPS हमको मालूम नहीं है, ठीक है? क्या है BPS? क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है? यार ये क्या है? R क्या है? R क्या है? ये भी कोफिशिएंट है, लेकिन कौन? कोरिलेशन कोफिशिएंट. कोरिलेशन कोफिशिएंट अच्छा R होता है और BPS होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट. याद रखना, रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे मिलेगा? PS जो बोला P अपॉन S, दैट मीन्स डेल्टा P बाई डेल्टा S इंटू R. बस निकालो 4/5 पुट करो. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गेट द इक्वेशन 5P minus 4S minus 88 equal to 0. This is the now first answer. The equation of regression lines P upon S, P on S. This is the equation, and you have to find out other one is there. Then P equal to what? 4S by 5 equal to 88. तुम इसको भी आंसर लिख सकता है. This will be answer. Okay, after calculation this will be the answer, and this will be answer, and P equal to this will be answer. ठीक है? देखो क्या होता है? P इंटू 0.8S इंटू 17.6, ये भी आंसर होता है. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द आंसर X and Y. We take at the place of P the variable X, we take at the place of S the variable Y, and that's why the answer will be X equal to 0.8 Y plus 17.6. This is the answer. Okay. This may be answer, but you have to use variables X, Y, then this will be the answer. Okay, but here is mention it. Here the P is used by X and S is used by Y variable. Clear? Clear. The regression line of X on P, that means S bar equal to BSP P minus P bar. What will be? कैसे होगा? सेम प्रोसेस. एस बार तो मालूम है, पी बार मालूम है, BSP मालूम नहीं है. मतलब BSP क्या होगा? क्या रिग्रेशन कोफिशिएंट है,
रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन पी, दैट मीन्स डेल्टा एस बाई डेल्टा पी, बस हो गया। आर इंटू करो तो मिल गया, वैल्यू पुट करो मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, और आफ्टर एक्स वाई यूज वी गेट या पहले आएगा एस इक्वल टू पी बाई 5 माइनस 20/103, दैट मीन्स एस इक्वल टू 0.2 पी प्लस 83, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ एस द वेरिएबल इज यूज्ड y, एंड एट द प्लेस ऑफ p द वेरिएबल इज की x, यू नो। हम लोग तो x और y पकड़ लिया, x, ठीक है। एस इक्वल टू y, p इक्वल टू x, सेम थिंग, क्लियर। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. Next, question number 14. 14 says the line of regression of marks in statistics, which is represented by x, on marks in accountancy, which is represented by y, for a class of 50 students is this. That means the line of regression of statistics and also accountancy is 3y minus 5x plus 180 equal to 0. Here is given the regression line of x on y is 3y minus 5x plus 180 equal to 0, and after that you have to create 5x and x equal to क्या है सच x equal to 3 by 5y plus 180 by 5 equal to that. So therefore the bxy, x को सब्जेक्ट करके y को निकाला, इसलिए बी एक्स वाई, वेर इज एक्स इज सब्जेक्ट अपॉन वाई, तो बी एक्स वाई इक्वल टू द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या होगा ना 3/5. दिस इज द नंबर 1, क्लियर। नाउ सेकेंड लाइन क्या बोल रहे हैं, एवरेज स्कोर इन अकाउंटेंसी is 44, that means x bar equal to accountancy क्या है x है, तो x bar equal to 44 given, ठीक है ना। accountancy means y है, इसलिए y bar equal to 44, and the variance of marks of in statistics is 9/16 of variation of marks in accountancy. तो वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है, वेरिएंस का मीनिंग होता है, देखो क्या है ना, एवरेज ऑफ अकाउंटेंसी तो बोल दिया, और वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स एक्स बार इक्वल टू क्या है ना 9/16, क्या है 9/16 इंटू वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी, दैट मीन्स वाई। 9/16 तक क्या है, क्यों ना हम लोग को तो वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 9/16 विद द वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी बोल दिया, देखो क्वेश्चन में देख लो, ठीक है यही तो बोला ना, वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये देखो वेरिएंस ऑफ मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज मीन्स क्या होता है, इक्वल टू किसके साथ इक्वल टू है ना 9/16 ऑफ माने क्या है इनटू किसका ऑफ ना वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला, दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ सम्स। तो अपना वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है, इक्वल टू 9/16 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई का स्क्वायर है, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी वाई। तो देयरफॉर डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई डेल्टा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/16, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इक्वल टू 3/4, क्लियर। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट ओवर हो जाएगा, तो हमने ऑलवेज वी हैव टू टेक प्लस लेना है, ठीक है देखो प्लस में, तो क्यू हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई क्यू निकाला, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई क्यू निकाला, तो क्योंकि ना हमको आर मालूम होना चाहिए, ठीक है आर क्या है, तुमको तो बोला जो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द एवरेज स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल्सो द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मीन्स कौन होता है, बिटवीन मार्क्स, क्या है आर निकालना है,
इसलिए आर का फॉर्मूला क्या है ना, वी नो दैट बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, एंड दैट वाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई इक्वल टू हमको निकालना है। ठीक है, क्लियर? ताहले बी एक्स वाई इक्वल टू आर इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, तो बी एक्स वाई क्या है 3/5, पहले निकाल लिया हम लोग। बी एक्स वाई 3/5, आर मालूम नहीं है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा अभी निकाला, उसको पुट करो, तो आर इक्वल टू 4/5, आर इक्वल टू क्या है 4/5, आर निकल गया। ठीक है, ताहले हम लोग को क्या चाहिए अब, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई तो मालूम था, बी वाई एक्स क्या होगा ना, आर इंटू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, रिवर्स होगा, वाई अपॉन एक्स, दैट मीन्स डेल्टा वाई ऊपर डेल्टा एक्स नीचे, बस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होगा ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई का रिवर्स होगा। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई कितना था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई 3/4 था, तो मैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स 4/3 होगा, बस 4/3 पुट करो, आर इक्वल टू 4/5, दैट मीन्स 16/50। क्लियर? चलो हम लोग का बी वाइज भी मिल गया। चलो हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एवरेज स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स and also the coefficient of correlation between marks in statistics and accountancy. That's the coefficient of correlation between marks in statistics and accountancy. That means the coefficient of correlation between क्या x and y, x and y, that means r. कैसे होगा ना, रूट ओवर बी एक्स, दिस इज द फॉर्मूला, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स रूट ओवर, बस पुट करो, यही आंसर है 0.8। ठीक है, 0.8 आंसर है। क्लियर हो गया? नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, एंड क्वेश्चन नंबर 1 बोला, क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 वाज फाइंड द एवरेज स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स। एवरेज स्कोर निकालना है, एवरेज स्कोर मीन्स एक्स बार, क्या चाहिए एक्स बार, एवरेज स्कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या प्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कर रहा है एक्स को, स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट कर रहा है एक्स को। ठीक है, तो कैसे होगा ना, वी नो दैट द एग्जाम्पल लिनियर रिग्रेशन, दैट इज 3y - 5x + 180 = 0। आफ्टर दैट x इक्वल टू, x को सब्जेक्ट बनाओ, ऐसे ऐसे है। ठीक है, बस हो गया। आप क्या करना चाहिए, इसको x - x बार, जो लिनियर रिग्रेशन का जो इक्वेशन होता है, x - x बार इक्वल टू क्या है बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, वही फॉर्म में अरेंज करो इस लाइन को। तो ऐसे ही कर रहे हैं हम, क्या कैसे करेगा, देखो x माइनस क्या किया, यहाँ पर 36 था ना, 36 को इधर ले आओ, 3/5 वाई है। ठीक है, आप -3/5 इंटू क्या है 44 है, 44 किया, क्यों ना हम 3/5 कॉमन लेगा, कॉमन लेने से y - 44 मिलेगा हमको, तब ना y - y बार मिलेगा, और यहाँ पर x - x बार मिल रहा है। ठीक है जी, नाउ वी आर गोइंग टू x - x बार, एंड हियर ऑल्सो आफ्टर कॉमन टेकिंग कॉमन 3/5 वी गेट y - y बार। क्लियर? तो ये तो बाहर से आया ना, it is coming from outside, 3/5 into 44, and that's why we have to put plus 3/5 into 44 for balancing। दोनों काट जाने से प्रीवियस लाइन भी रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 3/5 कॉमन ले लो, y - 44 हो गया, r यहाँ पर जो है उसको उस तरफ ले जाओ, एक क्या है 132/5 माइनस हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन करो, इसको कैलकुलेशन करने से मिलेगा दिस, माइनस कॉमन ले लो तो दोनों प्लस हो जाएगा, 312/5। क्लियर? बस ताहले क्या फॉर्म मिल गया, x - x बार इक्वल टू 3/5 y - y बार इज इक्विवेलेंट टू x - x बार pxy। बस ये pxy क्यों लिखा, नहीं तो pxy होगा ना, x अपॉन y, वी हैव टू क्रिएट सब्जेक्ट इन लिनियर रिग्रेशन x। ठीक है जी, तो हमने pxy
बस कंपेयर करने से क्या मिला, एक्स बार इक्वल टू 312/5 एंड वाई बार इक्वल टू 44. ठीक है, तो तुमको क्या आंसर मांगा, व्हाट was the question? Find the average score in statistics. स्टैटिस्टिक्स को कैसे पकड़ना है, और अकाउंटेंस. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को कैसे पकड़ना है, स्टैटिस्टिक्स को एक्स से पकड़ना है. तो एक्स बार का आंसर क्या होगा, तो देन वी विल गेट एक्स बार इक्वल टू 312/5, दैट मीन 62.4 आंसर. ठीक है, 62.4 आंसर. ठीक है, एक्स बार यही आंसर मांगा, लेकिन हेयर गिवन y इक्वल टू 44 इंटू द इक्वेशन. ठीक है, y बार यहाँ पर क्या है, y का जगह में क्या है, y बार क्या था 44. यदि y बार मांग रहा था जो एवरेज स्कोर इन अकाउंटेंसी, देन y बार इक्वल टू 44 विल बी द आंसर एंड x बार इक्वल टू 62.4. क्लियर हो गया. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 15.